Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10 and habitat, and today is its third lesson. So my dear students, before moving on towards our main lesson, let's quickly recap what we have done in the previous lesson. You have to answer a few questions. Quickly tell me, what is a habitat? A habitat is a place where plants and animals live, and there they get food, water, and shelter and life gases. What are the components of habitat? Quickly tell me. The components of habitat are living and non-living components. And what does a habitat provide? A habitat provides food, water, air, and shelter. Okay, my dear students, now we will move forward towards some revision and some discussion that food, water, air, and shelter is provided in a habitat. Now on your screen, you will see different habitats. Like you can see, this is underwater scene. आपको एक नजर आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, कुछ plants हैं. This is a aquatic habitat. This is an aquatic habitat. Underwater जो भी habitat होता है उसको aquatic habitat कहते हैं because aqua means water. So this is an aquatic habitat. यहाँ पे बहुत सारे underwater plants होते हैं, fishes होती हैं which live here. Now we will move forward towards another habitat. This is a forest habitat where different wild animals live. Now comes the desert habitat where camel, cactus, rats, snakes, aloe vera type plants and animals live here. Now you can see polar region where there is ice throughout the year, and animals like polar bears and Arctic fox live in this type of habitat. So my dear students, you have seen different habitats. Now today's student learning outcome is given on page number 81, and by the end of today's lesson, students will be able to describe the different habitats for living things like polar region and desert. आज हम ये दो habitats discuss करेंगे and name plants and animals that live in each of the different habitats. So आज हम two types of habitats जो हैं उनको discuss करेंगे, polar region and desert. और यहाँ पे कौन कौन से plants और animals inhabit करते हैं, रहते हैं, survive करते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. So my dear students, let's move forward towards Islamic perspective. Allah is the one who made the earth a habitat and for you and the sky as a structure, and He designed you and has perfected your design. So my dear students, Allah Ta'ala ने अर्थ को जो है एक हैबिटेट बनाया है तमाम जिंदा रहने वाले जानदार चीज़ों के लिए, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी. और वहाँ पर फिर छोटे छोटे हैबिटेट्स हैं जैसे कि एक्वेटिक, डेजर्ट, पोलर रीजन्स. दीज आर डिफरेंट हैबिटेट्स. छोटे छोटे हैबिटेट्स हैं जो कि अर्थ में हैं. तो अर्थ अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहने की जगह बनाई है, एंड इट इज़ द ओनली प्लानट which where the life exists. So my dear students, let's move forward towards the pre-reading question. Name some living places of land animals. So ज़मीन पे जो जानवर रहते हैं उनकी कुछ रहने की जगहें बताएं मुझे. Forest, desert, polar region यानी कि कुछ ice में रहते हैं, कुछ सहरा में, sand में रहते हैं. Some animals live in forest यानी कि उनको trees पसंद होते हैं तो वो वहाँ रहते हैं. Some animals लिव अंडरग्राउंड, कुछ ज़मीन के नीचे भी रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है वो सॉइल में रहता है, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, दे मेक बरोज एंड दे गो इनसाइड द ग्राउंड. सो दीज आर डिफरेंट लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स. So my dear students, now is the time to open your reading page given on page number 83. Quickly open it in your books. I hope everybody has opened page number 83. हम habitat को define already कर चुके हैं. Now we will discuss about kinds of habitat. So kinds of habitat, quickly put your fingers. Kinds of habitat.
there are number of different habitats available for living beings. Some of them are polar regions, deserts, forests, sea and river habitats. ठीक है? So, मैंने आपको बहुत सारे habitats की अभी pictures भी दिखाई थी, लेकिन कुछ habitats जो हैं जो कि जहाँ पर plants और animals रहते हैं, उनमें से है polar regions हैं, deserts हैं, forests हैं, sea है, river है, ये सब जो habitats हैं यहाँ पर different plants और animals रहते हैं. Today we will discuss about polar region habitat. So quickly read it with me. Polar regions are north and south poles of the earth. These are the coldest habitats where most of the land and water remain frozen around the year. Cold winds blow most of the time. So my dear students, अब पोलर रीजन हैबिटेट्स जो हैं वो अर्थ के दोनों तरफ होते हैं, टॉप पे और बॉटम पे. वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज द साउथ पोल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ पर स्नो रहती है और जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो जम जाता है और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है जिसकी वजह से बहुत सख्त सर्दी होती है. नाउ लाइफ इन पोलर रीजन. सो इतनी ठंड में कैसी लाइफ होती है, लेट्स डिस्कस. In polar regions, vegetation is less. That means there are less plants. Only dwarf shrubs and grasses are visible for a month or less. These could not grow there due to deep snow. Sulfur buttercup and Arctic heather, however, are two prominent plants. So my dear students, वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वहाँ vegetation, that means plants जो हैं वो बहुत ही कम grow करते हैं क्योंकि snow इतनी ज़्यादा deep होती है, so the plants cannot grow or survive in such cold weather. For a month or two, some plants, very few plants grow in this region, जिनमें sulfur buttercup और Arctic heather जो हैं, these are some prominent plants. Otherwise, vegetation ना होने के बराबर है, it is extremely less. Okay, my dear students, now think about it. The climate of the world is changing rapidly. It is causing changes in polar habitats. The snow is melting. How will it affect the polar animals? What benefits does the melted snow in polar region may bring to humans? So my dear students, क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि हमारी जो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, लाइक बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, पोल्यूशन है, जिसकी वजह से पोलर रीजन्स पे जो आइस कैप है या जो बर्फ़ है वो कॉन्टिन्यूसली मेल्ट होती जा रही है. तो आप मुझे ये बताएं कि इसका सोचें ज़रा, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनके ऊपर, बिकॉज इट्स देयर होम. ऑब्वियसली अगर आपके घर के अंदर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए या चेंज आना शुरू हो जाए, सो यू कैन नॉट लिव देयर प्रॉपर्ली. सो वो वहाँ जो रहने वाले एनिमल्स हैं डेफिनेटली दे विल बिकम एंडेंजर्ड, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा. अनदर थिंग इज़ व्हाट बेनिफिट्स. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ हुआ है, व्हाट बेनिफिट्स डज द मेल्टेड स्नो इन द पोलर रीजन मे ब्रिंग टू ह्यूमंस. क्या कोई बेनिफिट हमें हो सकता है पोलर कैप पे जो बर्फ है उसके पिघलने से? No. The answer is no. You will not get clean water by that. क्योंकि ये जो पानी है, जो पोलर कैप्स का पानी है, it will directly go into the oceans and seas, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाएगा एंड इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट. सो जो क्लाइमेट चेंज है या जो हीट बढ़ती जा रही है उसका हमारी उसका पोलर कैप्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन come on page number 84 and start reading. A very few animals inhabit the polar region. These include Arctic fox, polar bears, penguins, etc. Such animals have a strong ability to withstand extreme cold weather and food scarcity. So my dear students, किस टाइप के एनिमल्स जो हैं वो
पोलर रीजन में रहते हैं. आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर सम prominent animals which inhabit in polar regions. यानी कि ये वाले एनिमल्स जो हैं ये कुछ प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं, खास एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और ये बहुत ही टफ एनिमल्स होते हैं. दे कैन इजीली लिव इन दिस स्वेयर कोल्ड क्लाइमेट. इनको आदत होती है यहाँ पर रहने की, इनका घर होता है. बल्कि जो पोलर बेयर्स होते हैं दे लिव अंडर द स्नो के अंदर, वो बरोज बना लेते हैं जिनके अंदर वो जाकर रहते हैं. सो दे like snow or snow is their home. Okay, my dear students, now let's quickly look at the animals which live in polar region. Arctic fox, you can see on your screen, polar bear, then there is sulfur buttercup, Arctic heather and penguins. These are some prominent life in polar regions. Now quickly move towards page number 83 again. Here is teacher's note. After explaining the lesson, challenge the student to think creatively. Pose some questions such as Lahore Zoo management wants to bring polar bears and penguins to the zoo. What measures will the administration take to provide them with their natural habitat? So my dear student, अगर लाहौर ज़ू में हम पोलर बेयर्स को लाना चाहें तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? क्या वो लाहौर के बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. सो क्या चेंजेस उनको करने पड़ेंगे? उनको आर्टिफिशियल आइस वहाँ रखनी पड़ेगी उनके शेल्टर के लिए, क्योंकि वो स्नो में रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा. इसके अलावा वो खाने के लिए उनको सील, दे ईट सील, एक एनिमल होता है, दे ईट इट, और उनको इस तरह की जो है फूड भी वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय polar bears. So polar bears को रखना कोई आसान बात नहीं है. They live in extremely cold environment. So my dear students, here you can see they prey on seals. This is a seal. It lives in water और ये भी बहुत cold climate में रहता है and polar bears prey on them. They eat them. Okay, now quickly open page number 84 in your books. Desert habitat. Quickly read it with me. Deserts are bare lands with few plants, animals and with less or no water. It is very hot place. Its soil is sandy and air is very hot and dry. 1/5 of the earth is covered with deserts. So desert का climate कैसा होता है? पानी बहुत कम होता है, plants बहुत कम grow करते हैं वहाँ और usually I'm telling you कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पर sandy area होता है और weather जो है वो hot होता है. इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जो है बहुत ही कम वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ही कम होता है वहाँ पर. लाइफ इन डेजर्ट. Although the desert environment does not support a variety of plants, however, succulent plants with ability to store water. अच्छा, अब succulent plants कौन से होते हैं? ऐसे plants जिनके अंदर पानी स्टोर करने की ability होती है. उनमें कौन कौन से plants हैं? Cactus, acacia, aloe vera. Survive well. Animals such as camel, rats, kangaroo, lizards, snake and desert tortoise are inhabiting there. So my dear students, कौन कौन से animals हैं और कौन कौन से plants हैं जो desert में रहते हैं? Plants वो वाले होते हैं जिनके अंदर water storage की ability होती है. They are called succulent plants like cactus, aloe vera and acacia. And which animals inhabit there? Camel, rats, snakes, tortoise, kangaroos and lizards. These types of animals live in deserts. You can see them on your screen too. Camels, this is aloe vera, this is a cactus plant and this is a rat which lives in the desert. Okay, my dear students, now on page number 84, you can see teacher's note. After explaining the lesson, brainstorm the students by asking some questions such as, what will happen if the camel, the desert plain, has to live in polar region? What problems will it face in this case? So, my dear students, this is polar region. और यहाँ पे अगर मैं camel को ले आऊँ, ये camel आ गया इधर, तो अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या can it survive in this extremely cold weather? No, it cannot, because it lives, इसके अंदर ऐसी ability है कि ये hot weather में survive करता है, ये hot deserts के अंदर survive करता है. It cannot survive in this cold climate. इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी,
इसके अलावा इसके लिए जो ये फूड खाता है वो फूड वहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो जब ये इसको फूड ही नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट सर्वाइव. सो अ बिग नो, इट कैन नॉट सर्वाइव इन extreme cold polar region. So my dear students, now is time for tidbits. All deserts are not hot. अब ये सोचने की बात है, इसको जरा गौर कीजिएगा. All deserts are not hot. A few very cold too. The largest hot desert is Sahara and the largest cold desert is Antarctica. ठीक है. अब डेजर्ट्स जो हैं वो सिर्फ हॉट नहीं होते. हमारे दिमाग में ये है कि बहुत ज़्यादा सैंड होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कैक्टस लगे हुए होंगे जगह जगह, तो दैट मीन्स इट इज़ अ डेजर्ट. डेजर्ट दो तरह के होते हैं. इट इज़ कोल्ड वन एंड ऑल्सो हॉट वन. द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज एंटार्क्टिका. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन ना होने के बराबर होती है. वेजिटेशन मीन्स पौधे नहीं उगते यहाँ पर, और बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बोथ आर कॉल्ड, वन इज कॉल्ड हॉट डेजर्ट एंड अदर इज कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. सो थिंक अबाउट इट, हाउ आर पोलर रीजन्स एंड डेजर्ट हैबिटेट्स सिमिलर? मैंने अभी आपको बताया, लेस रेन एंड नो वेजिटेशन, ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन, make them similar. Okay? Okay, now is the time for practice, my dear students. We will move forward towards an independent activity number 2. यहाँ पे मैं आपको जो है countries find out करने हैं जो Arctic और Antarctic regions में हैं. So here is the world map. First we will look at an Arctic region. और जो भी यहाँ पर countries हैं वो है Canada, Denmark and Russia, which you can see. Canada, Denmark and Russia, they all belong to Arctic region. Arctic pole के ऊपर हैं ये, North pole पे हैं. Then comes Antarctic region and the countries here are Australia and New Zealand, almost South pole पे हैं. And these countries are extremely cold. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. So my dear students, now quickly move towards page number 85. आप इनके answers जो हैं वो लिखेंगे आप लोग. Here you will write down the answers. Okay. Now we will move forward towards page number 85. Independent activity number 3. Read the map. Look at the map of Pakistan. Point out deserts on the map. Note their name and provinces and paste relevant pictures in the scrapbook. Okay, my dear students. Now I am showing you the map of Pakistan. और जो उनसे desert यहाँ पर हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ. Number 1 is Thar Desert. It is located in Sindh province. Then number 2 is Cholistan Desert. It is located in Punjab. Then comes Thal Desert. It is also located in Punjab. Punjab में 2 deserts हैं, Cholistan and Thal. And the last 4th desert is Kharan Desert. It is located in Balochistan. ये बलोचिस्तान में है, ठीक है? These 2 are in Punjab and Thar Desert is in Sindh. So there are 4 deserts: Thar, Cholistan, Thal and Kharan Desert. ठीक है, 4 deserts हैं पाकिस्तान में. आप इनकी relevant pictures लेके अपनी scrapbook में भी paste कर सकते हैं. Now we will move forward towards the practice. Question number 3 on your screen. What are the characteristics of desert habitat? Quickly tell me. Very less rainfall, very less water, very less vegetation, and you can see it on your screen. Dry, less vegetation and less rain. These are the characteristics of hot and cold, both types of deserts. Okay, my dear students, you can pause the video and you can do the question in your notebooks. Now is the time for evaluation. Given on page number 95, quickly answer some questions. Quickly tell me how many types of habitats exist. Quickly. Number 1, desert, polar region, forest, aquatic, 4 types of habitats. List environmental features of polar region habitat. Yes, कैसा environment होता है? Extremely cold, snow everywhere and less vegetation, less animals. So this is what are the environmental factors of polar region. Name 2 animals and 2 plants in polar region habitat. कौन कौन से 2 animals और 2 plants polar region में हैं?
पहले animals, let's talk about the animals. Polar bears, Arctic fox, very good. Now quickly tell me the plants. Sulfur buttercup, Arctic bell heather, very good. Now quickly, what is a desert? Describe in 3 words. Dry, no rain, less vegetation. This is a desert. Name some of the animals and plants inhabiting the desert. Camel, rats, snakes, kangaroos live in desert, and plants like aloe vera, acacia and cactus are inhabit in deserts. Okay, my dear students, now is the time for your homework. Quickly note down your homework. For homework, you will do home activity number 2, which is given on page number 83. Compare the habitat where you live at with polar region habitat. Make a table. अच्छा, अब जिस habitat में आप रहते हैं और उसको आपने compare करना है polar region के साथ. What changes will you need to make your habitat similar to polar region habitat? Write in your notebook. अब आपने अगर अपने हैबिटेट को पोलर रीजन में चेंज करना हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको उसके बारे में भी अपनी नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट, कंपेयर बोथ द हैबिटेट्स एंड देन हाउ यू विल चेंज योर हैबिटेट. मैं इस रूम को अगर पोलर रीजन में चेंज कर दूं तो व्हाट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड, आपको उसके बारे में लिखना है. ओके, दिस विल बी डन बाय यू. आई हैव ऑलरेडी told you a lot of things about polar region. Now on page number 84, given home activity number 3, are desert ideal habitat to inhabit? Why or why not? Describe in your notebook. अब deserts जो हैं, क्या वहाँ का ideal temperature है या वो ideal living place है? Yes or no? आपको अपने answer को justify भी करना है. Okay? You will do this in your notebook. Now we will move forward towards your worksheet. This will be provided to you by your teacher. You will write down your name and your class. And here you can see आपको ग्रुप दिया गया है, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं. इनको आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पोलर रीजन में आते हैं और कौन से डेजर्ट हैबिटेट में आते हैं. यू हैव टू सेपरेट देम आउट. मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में ये समझाया है. यू कैन नाउ इजीली डू इट. लेट मी डू 1 or 2 फॉर यू. आर्टिक बेल हीथर विल कम अंडर पोलर रीजन. Okay. Now desert habitat, cactus will come under desert habitat. Okay. This is how you will do the rest of the worksheet. Now we will move forward towards your warm-up. There are different habitats in the world, each possessing different features, specific features suitable for particular animals and plants. These habitats are polar regions, deserts, forests, and aquatic habitats. Polar region habitats are characterized by severe cold and freezing climatic conditions. Polar bears in animals and Arctic bell heather in plants are its representative inhabitants. यानी कि these two are prominent plants and animals. Okay. Deserts also have a severe climate, but it is extremely hot and dry with sandy soil. Camel and cactus are its representative species. Okay, these two are the main animals and plants which are present in the desert. So my dear students, I hope you have enjoyed this lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.